Okay, so are you there? Hello? Yes, sir. So कल last class क्या पढ़े थे? Geography, what we have learned in geography in the last class? Climate and weather introduction, sir. Climate and weather introduction. Weather introduction. So what you can say, the climate. In the climate, what we'll be learning most of all? Large area and long period of time. Hello? You are getting my voice? Yes, sir. बोलिए. हाँ, sir. आ रही है. Now, what we have discussed in climate? Normally we have sun, the heat. Heat. Dry. Yeah. Climate, that is cyclones, wildfires, and glaciers. Glaciers. and the glaciers. Okay? Then these are the things which we will read. Then coming to the what is climate? Please read the climate. Please read climate. Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, more than 30 years. Sure. So I should continue weather also. Yes, please read. Weather refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time. The elements of weather and climate are the same. That is temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, and precipitation. But You may to have the precipitation. So please remember climate. Climate is sum total of weather, large area, and long period of time. Please remember climate माने sum total of weather, large area, long period of time. And what is the long period of time? Greater than 30 years or more equal than to 30 years. कम से कम 30 साल का duration. It is climate. ठीक है? Then you have weather. Weather refers to state of atmosphere. What is atmosphere? Atmosphere is envelope of gases. Envelope of gases. ठीक है? Gases. Next, the elements of weather and climate. Elements of weather and climate.
Climate. ठीक है. Now weather of elements of weather or climate क्या है? There are 4. Wind. The elements of weather and climate are same. Temperature, atmosphere, pressure, atmospheric pressure, wind and humidity and precipitation. There are 5. What are those? 5. Temperature, one. atmospheric pressure, temperatures. First elements याद रखो. Elements of weather and climate. ठीक है. उसके बाद सबसे पहले अल्फाबेटिकली वाइज याद रखो. सबसे पहला अल्फाबेट क्या आता? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ए के बाद ह्यूमिडिटी. उसके बाद ह्यूमिडिटी. उसके बाद टेम्परेचर. प्रेसिपिटेशन. पी आता. ए जी है तो आइए कह नो पी. प्रेसिपिटेशन. उसके बाद टेम्परेचर. टेम्परेचर, विंड and wind. So the elements of weather and climate are, temperature of weather and climate are atmospheric pressure, humidity, precipitation, temperature, wind. AP, atmospheric pressure, humidity, precipitation, temperature and wind. समझ में आ गया? Wind. Next. ठीक है. I'm just revising. ये पूरा डिटेल में पढ़ा दिया लास्ट टाइम. ठीक है. Today and after that we have seen the concept of equinoxes. Equinoxes कब होते हैं? First equinox happen in, please read this. March 2020. 21-22. 21 to 22. तो इक्विनॉक्सेस देखिए. इक्विनॉक्सेस में क्या होता? इक्वेटर मार्च 21-22. इक्वेटर के जो सन के रेस है किस पे फॉल होते? द सन रेस Equator. फॉल्स ऑन Equator. इक्वेटर. ठीक है. देन इट कम्स हियर. ठीक है. उसके बाद आफ्टर 3 months it comes here. The sun ray directly fall on Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. Again the sun का change हो जाता. Then again there is a equinox after 6 months in September. Then you have again the earth changes its position, comes here. This is known as summer solstice. This is known as winter solstice. This is known as equinox. This is also known as equinox. Equinox happens at an interval of 6 months. Okay, and the solstice also happens at the interval of 6 months, and the cycle goes on. Equinox, equator, solstice, summer solstice, you will have Tropic of Cancer. Then winter solstice, you will have Tropic of Capricorn. 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 This was the revision which we have done, and we have seen the areas. सबसे the horizontal is known as Torrid zone. Equator. first one equator. ठीक है. First equator है. This is the, what you can say, this is the equator, the vertical horizontal line. Yeah, this is also a circle, but it is, as from the front view, it is being shown as the straight horizontal line. Then you have this Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. ये भी एक सर्किल है, imaginary circle in the north hemisphere. The area between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is known as Equator. equatorial. Otherwise it is also known as Torrid zone. Then the area between Tropic of Cancer and Arctic circle is known as North temperate zone. non-temperate zone. Then the Arctic between and North Pole is known as
Red zone. frigid zone. Okay. Similarly, when you come to the south, the area between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle is known as South temperate zone. South Temperate Zone. The area between Antarctic Circle and South Pole is known as frigid zone. Okay. समझ में आ गया? And this Yes, is the sun's rays. And one more thing, I have explained you the apparent movement of the sun. Okay. What is the apparent movement of the sun? This is the equator. This is the equator. This is the Tropic of Cancer, Cancer. and this is the Tropic of Capricorn. Capricorn. The sun, what happens? The sun goes up. First it will be at equator. Sun goes up. Then again it comes down. Then it comes down. Then again it comes to the Tropic of Capricorn. Then again it goes back. Again it goes back to the equator. This is known as what? Apparent movement of Apparent movement of sun. Starts from the equator, goes to the Tropic of Cancer. Cancer. Again come back to the equator and goes to the Tropic of Tropic. Capricorn. And again from Tropic of Capricorn goes back to the equator. Equator. So it is known as apparent Apparent movement of movement of sun. Now when the sun is here, please remember, when the sun is here, it is giving direct क्या बोलते हैं, direct light rays. When the sun is here, it is giving direct rays on Tropic of Cancer. The sun is not going beyond this line, but what is happening? Slant rays are being covered in the poles, and the sun is here. Slant rays are being covered in the south pole. समझ में आ रहा? This is why they in the poles they have 6 months, 6 months night and 6 months day. Okay? समझ में आ गया? Now we have learned this, and then we have latitude. Factors affecting India's climate. So what are the factors which are affecting India's climate? What is the first factor? latitude and altitude. Latitude. What is latitude? Latitude किसको बोलते हैं? Latitude किसको बोलते हैं? Horizontal lines. This is the horizontal line. ठीक है? Now this is the latitudes. These are the imaginary lines. ठीक है? These are the latitudes. Why the latitudes are being introduced? Why the latitudes being introduced? To measure what? To measure what? Insolation. इंसोलेशन. ये भी लास्ट टाइम भी पढ़ाया. अगर ये क्वेश्चन आया आप लोग रॉन्ग करके आते 100%. लैटिट्यूड किस लिए बनाए? Insolation measure. इंसोलेशन. व्हाट इज इंसोलेशन? Inspiration. इनकमिंग. Solar radiation. इनकमिंग सोलर रेडिएशन. समझ में आए? तो लैटिट्यूड किसके लिए बनाए? For incoming solar radiation, to measure the heat which is coming from the from the sun. Here, then please read fast. जल्दी पढ़िए बस. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Run of Kutch in the west to Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical area. All the remaining area north of the tropic lies in the subtropics. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climates. So this is India. This is India. ठीक है? This is India, and this circle is passing here. ठीक है? This is a circle across. Then starting from Run of Kutch in the west
to the east में कौन है? East. In the east. Top. Mizoram in the east. East. समझे? So in the tropic, therefore India's climate characteristic of the tropic as well as subtropical climate. Climates. Next. Please read altitude. Please read the altitude. Altitude has mountains to the north, which have an average height of about 600 meters. India also has a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters. The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. It is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to Central Asia. ठीक है, so mountains of the north. Altitude माने what is the altitude? Height. Height माने relief. So India has a mountains to the north which have an average height of 6,000 meters. ठीक है, उसके बाद India also has a vast coastal area India has a where the maximum India vast has a coastal area. vast coastal areas. For example, this take it as India. This take it as India. Then we have here we have this mountains. ठीक है? Here you have the mountain. After this you have this is the what you have. This is the Western Ghats. इधर वेस्टर्न घाट्स है, इधर वेस्टर्न घाट्स है, लेकिन जो एरिया है ना इधर इसको बोलते Coastal हैं area कोस्टल एरिया. ठीक है, near to the sea. और इधर क्या है? Eastern Ghats. ईस्टर्न घाट्स. ये एरिया ब्रॉड है, ये एरिया नैरो Narrow. है. ठीक है. सो इन द नॉर्थ विच हैव एवरेज हाइट ऑफ, ये कितना एवरेज हाइट इसका? 6,000 meters. 6,000 मीटर, जो ऊंचे है. Where maximum and the vaster coastal areas where the maximum elevation is about 30 meters, 30 मीटर तक ऊपर जा रहे. Himalayas prevent cold winds. What is the use of Himalayas? Himalayas prevent cold winds which are coming from Central Asia. Central Asia. इधर से क्या आ रहे? Cold winds आ रहे. Cold winds. Otherwise we would have become a desert like the Tibet. It is because of these mountains that the subcontinent experiences comparatively milder winters as compared with the Central Asia. समझ में आ गया? Clear? Yes, sir. Any doubt? Next we have seen the normal lapse rate. Now we have seen what is the relation between relief and temperature. Relief is inversely proportional to Temperature. ठीक है? Whenever the height increases, the temperature decreases. Decrease. And whenever the height decreases, temperature Increases. Yeah. ठीक है, समझ में आ गया? Right. So we have seen for every 1,000 meters, there is every 1,000 meters. What is the difference here? Increase in temperature. कितना डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा? 30 minus 23.5 कितना डिक्रीज हो रहा? 6.5. 6.5 degrees. Again 23 minus 73.5 minus 17, 6.5. 6.5. 5 degrees. फिर 17 minus 10.5, 6.5. 6.5 degrees. So हर 1,000 meters को, for every 1,000 meters, how much temperature is being decreased? 6.5. 6.5 degrees. Now if I want 1 degree will be 1,000 divided by 6.5. So you will get 1 for 1 degree. If there should be 1 degree change in temperature, the height should vary at a rate of 165 meters.
ठीक है, ये अपन कल पढ़े थे, ठीक है, ये वी हैव लर्नड इन द लास्ट क्लास, 5 days क्लास, अंडरस्टूड, सैटरडेज क्लास है, ये क्लियर है? दिस इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट, normal lapse rate. And again, and then we have explained, then we have understood this graph. Now when you are going from the ground at the top, when you are going from the ground to the top, what is happening? As we know this, as the height increases, temperature decreases. But please remember, it is happening only in the troposphere zone. This relation, जो मैं आपको relation दिया, ये the relation which I gave you now is only happening in the troposphere. Only happening in the troposphere. The very first layer, if you go from ground to top for 1000 meters, you will have troposphere. And again, if you go to 1000 to 5000, that is 4000 meters, you will have stratosphere. Then again 10,000 meters, then you have again this much, and again you have this much. Then after thermosphere you have exosphere. ठीक है, exosphere में एक आता ionosphere, उसके बाद आता atmosphere. ठीक है, clear? समझ में आ गया? Now as you take a graph, when you're taking a graph, if you go from left to right, the temperature temperature increases, and when you're coming from right to left, the temperature decreasing. So at 0 degrees, आप जब जमीन पे जब अपन जमीन पे बैठे हुए हैं, अपना टेम्परेचर, you are feeling heat or not? Now you are feeling some heat on the land. Yes, sir. ठीक है, when you go up, assume that you are flying up, then the temperature, as we have seen, relief is inversely proportional to temperature. ठीक है, as you are going up, relief is increasing, what will happen? Temperature decreases. Temperature will decrease. Then it is decreasing, it is coming from right to left. ठीक है, and for some time, and for 10,000 meters, it is stopping, it is becoming constant. Sudden कुछ भी नहीं होता. Please remember, there is no sudden, nothing is sudden. When it goes to tropopause, then it becomes constant. Again, when you go up in stratosphere, temperature will increase or decrease? Increases. Increases. Again, there is a constant. After stratosphere, what is the layer? Next layer? Mesosphere. Temperature is increasing or decreasing? Increasing. Decreases. पीछे जा रहा. पहले टेम्परेचर डिक्रीज होता, फिर रुक जाता, फिर इंक्रीज होता, फिर रुकता, फिर डिक्रीज होता. ठीक है, दिस अल्टरनेट, ये कहानी चलते रहती. ठीक है, थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता ही होता. गर्मी सर्दी, गर्मी फिर सर्दी, याद रखो ऐसा. ठीक है, या तो सर्दी, पहले सर्दी होती, फिर उसके बाद गर्मी होती, फिर उसके बाद सर्दी, फिर उसके बाद गर्मी. विंटर समर, विंटर समर, विंटर समर. समझ आ गया? अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes, sir. उसके बाद में we have increased. Please read this point. Please read. I have already explained you, just please read. Temperature decreases with increase in height at the rate of 6.5 degrees centigrade per 1000 meters difference in height, or 1 degree centigrade for every 165 meters. Normal lapse rate. The high peaks of the Himalayas are thus always covered by snow. Shimla is therefore cooler than Delhi as it lies at a higher elevation. Ooty in the Nilgiris in the Western Ghats is cool even in summer because of its height, though it lies near the equator.
So temperature decreases with the increase in the height at a rate of 6.5 degrees Celsius per 1000 meters, and in a height of 1 degree Celsius for 165 meter. It is known as normal lapse rate. Normal lapse means the temperature is decreasing. ठीक है, समझ में आ गया? And because of this, there is a variation temperature. If you go, देखिए, if you go, this is India. Where are the Himalayas? These are the Himalayas. ठीक है, these are the Himalayas. Now you have plains here. You have plains. Plains है, फिर you have different region here. So sea level से अलग है. All these heights are different from the sea level. So because of that, we have difference in temperature. The high peaks of Himalayas are colder. Like example, Shimla. जब नीचे और दिल्ली में आ जाओ, the elevation is different. And the Ooty in the Nilgiris or the Western Ghats is cooler, even in the summer. जैसा height ज़्यादा रहती, वो area cool रहता. जैसा height नीचे रहती, when the height is lower, the area is hotter. ठीक है? समझ में आ गया? Yes. Right? Yes, sir. Next. Now I have explained you till this point. Now next. Distance from the sea. Distance from the sea is also known as, please remember, distance from the sea is also known as continentality. Continentality. Distance from the sea is known as continentality. Continentality. Sometimes your notes में आता, in your exams it is being asked. Distance from the sea. ठीक है? Please read. The places which are in the interior experience continental climate as they are far from the moderating influence of the water bodies. Now, Thus, एक मिनट. आज हैदराबाद में अपन बैठे हुए, we are in हैदराबाद, ठीक है? We are in हैदराबाद. हैदराबाद किधर है? कॉन्टिनेंटल है या कोस्टल रीजन में है? continental. कॉन्टिनेंटल माने it is the east, it is the interior of the land. ठीक है? Next, please read. Thus, such places experience very hot summer and cold dry winters. उसके बाद In contrast, the coastal areas enjoy almost the same type of climatic conditions throughout the year. coastal areas almost same type of climatic conditions throughout the years. Yes. So the places which are interior experience continental climate. अगर आपको क्वेश्चन आया यूपी हैदराबाद एक्सपीरियंस विद टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो कौन सा क्लाइमेट है हैदराबाद में? Continental. राजामंड्री एक्सपीरियंस विद टाइप ऑफ क्लाइमेट. व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट? Continental. राजामंड्री कोस्टल एरिया में है, आंध्रा में है. कोस्टल एरिया क्लाइमेट. Coastal area climate. Coastal area climate. Now please see this, what you can say, see this diagram. कैसा हो रही diagram? जमीन से क्या आ रहा? What is traveling? warm air, Warm air. जमीन से क्या आ रही? गर्म हवा. उसके बाद sea से cool sea, Cool sea breeze. cool sea breeze. Sea breeze. फिर ये डे में हो गया. रात में क्या हो जाता? This is the day. ठीक है, डे में क्या हो रहा? The warm air is going to the sea, and the cool sea is being coming from the sea here. ठीक है, so this is happening in the daytime. Clear? समझ आ रहा? So क्या है ये? This is the distance from the sea. और इधर क्या है? This is the coastal region. This is the interior. This is the interior part.
इधर इधर ज्यादा गर्मी रहती बिकॉज वार्म एयर जनरेट हो रही इधर से, so we have lot of heat. Clear? Next, is it clear? The places which are interior experience continental climate as they are far away from the moderating influence of water bodies. अगर आपको क्वेश्चन आया why do some places experience continental climate? Why? What is the justification? Far away from the moderating influence. Far away from the moderating influence of water bodies. उसके बाद पढ़िए. और उसके बाद पढ़िए. Thus, such places experience very hot summer and cold, dry winters. तो जो कॉन्टिनेंट में रहते उन लोगों का कैसा रहता नेचर एरिया का? वेरी Continental climate. कॉन्टिनेंटल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हॉट क्लाइमेट एंड cold, dry winter. कोल्ड भी रहते, ड्राई भी रहते, और विंटर्स क्या बोलते हैं, समर कैसा रहता? हॉट. विंटर कैसा रहता? कोल्ड, Cold, dry winter. सरद और सूखा. ठीक है, Right. समझ में आ रहा? दिस नोन एज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. और क्लाइमेट अगर जो कोस्टल एरियाज में है उसका उल्टा बोलो. कोस्टल एरियाज में क्या रहता क्लाइमेट? हॉट का उल्टा Cold. हॉट माने माइल्ड बोलो. हॉट माइल्डर क्लाइमेट, माइल्ड समर, माइल्ड समर. ये कोल्ड, हॉट, और हॉट भी नहीं बोल सकते आप, इसको भी माइल्ड बना दो. माइल्ड वेट विंटर, इसका उल्टा हो जाता है इधर. ठीक है, विल रीड इन द नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स. समझ में आ गया ये? Now going to the next slide. Please read. Impact of prevailing winds. The monsoons are the prevailing winds over the whole of India. These winds are a unique feature of the climate of India. During the summer season, the monsoon wind covers the entire India and brings rainfall to practically every part of the country. Okay, so क्या है? The monsoons are the prevailing winds over the whole India. So what are monsoons? Monsoon क्या है? Prevailing winds. Prevailing winds. Prevail माने आज के टाइम पे. Prevailing winds. उसके बाद These winds are unique feature of climate of India. these winds are unique feature of climate of India. ये क्या है? ये पूरा क्या है इधर? ये कौन सा सी है इधर? ये पूरा वाटर है. winds जा रहे. You have the winds. They are going this way. But reverse होके फिर वापस आते. What is monsoon? Monsoon is reversal of winds. Reversal of wind. Reverse Happens due to pressure difference. Please write down in your notes. What is monsoon? Monsoon is the reversal of winds. ये reverse क्यों हो रहे? Pressure due to pressure difference. Due to pressure difference. Or winds always travel from High always pressure travel to low from what to pressure. what? High pressure to low pressure. High pressure to low pressure. समझ गए? Clear? Right? Sir. Okay. During the summer season, monsoon covers the entire India, brings rainfall to the practically every part of the country. जो एक हफ्ते से लास्ट वीक अपने पास बारिश हो रही थी. ठीक है, समझ में आ गया? इम्पैक्ट ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स.
nothing but monsoon winds. Please read next. पूरा पढ़िए फिर explain करता हूँ. Relief forms an important factor that affects the climate of India. The high Himalayan mountain in the north act as a barrier to the southwest monsoon winds, forcing the winds to shed most of its rainfall in India before crossing the Himalayas. The cold winds in winter from Central Asia are mainly obstructed from coming into India by these high Himalayas. So the severity of winter in India is not that intense. The western and eastern Ghats on either side of the peninsula in South India force the monsoon winds to give plenty of rainfall in the coastal regions. Again, the eastern slopes of the Western Ghats fall in the rain shadow area as the Western Ghats obstructs the monsoon winds and get heavy rainfall on the western slopes. On the western slopes. समझ में आ रहा? देखिए ये है. This is what you can say. India है. This is the India. Relief forms an important factor that affects the climate of India. The high mountain ranges. The high mountain ranges here. They are the high mountain ranges. ठीक है? In the north acts barrier to the southwest monsoon. ये जो the winds जो आ रहे, the winds which are coming, कैसा आ रहे? ये winds पलट के आ रहे इधर वापस, और क्या ला रहे हो लोग? What they are bringing? What they are bringing with them? Rain. Moisture. They are bringing the moisture. ठीक है? Moisture क्या ला रहे? They are bringing the moisture. ठीक है? वो रूलों का नहीं ला रहे, क्लाउड में डाल के ला रहे, क्लाउड को ढकल लेते हुए ला रहे. समझ में आ रहा? The winds are not bringing the moisture directly. The winds have transferred that moisture to the cloud and they are pushing the cloud. ठीक है? And when they come here, because of these barriers, all the rain will be dropping here. ठीक है? समझ में आ रहा? This is the northern plains. Act as barrier to the southwest monsoon winds, forcing the winds to shed most of its rainfall in India before crossing the Himalayas. समझ में आ गया? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. The cold winds in the western central Asia are obstructed. ये जो एरिया है इधर, इंडिया का जो एरिया है, इधर क्या है? हिमालयास की वजह से क्या होगा? इधर जो हिमालयास की वजह से क्या होगा? जो विंड्स आ रहे उधर से, तिब्बत से, बिकॉज ऑफ दिस हाइट, इधर क्या हो रहा है? हिमालय, व्हाट द हिमालयस इज डूइंग? Himalayas are doing two things. One is stopping the cold winds from the Central Asia, and ये साइड क्या है? Stopping what? Stopping the, what you can say? Stopping the winds. South क्या? ये wind कौन सा है? They are coming from what? Where? ये एरिया कौन सा है? South. So जहाँ winds are always named from the point of origin. This is south west. This is our, what you can say? The winds are coming from here. ठीक है?
ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको नाम क्या दे दिए? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, और फिर इधर जब प्रेशर डिफरेंस हो जाता, ये कौन सा एरिया है? दिस नॉर्थ, एरिया इज नॉर्थ ईस्ट. This area is northeast. Now once this Northeast. comes, again they reverses. Again they reverses. And it comes back like this. And it comes back like this. समझ में आ रहा? अगर इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलेंगे, if it is south west monsoon, then इसको क्या बोलेंगे? What this we call as साउथ ईस्ट, नॉर्थ क्या ईस्ट है? नॉर्थ ईस्ट मानसून. और इसको Yeah, और please एक नाम है, continue. it is also known as रिट्रीटिंग, माने पलट के वापस आ जाना. इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग. साउथ वेस्ट मानसून इज आल्सो नोन एज एडवांसिंग मानसून. इसे क्या बोलते हैं? एडवांसिंग मानसून. एडवांसिंग मानसून. समझ में आ रहा? अगर ये जो पलट के वापस आ रहे, उसको क्या बोल रहे? रिट्रीटिंग मानसून. Retreating. माने पलट के वापस आना. क्लियर? समझ गए? तो साउथ वेस्ट मानसून इज आल्सो नोन एज एडवांसिंग मानसून. Advancing नॉर्थ ईस्ट मानसून इज आल्सो नोन एज retreating. रिट्रीटिंग Okay. मानसून. Monsoon. ठीक है, चलो राइट. समझ में आ रहा? Forcing the winds to shed most of its rainfall in India before crossing the Himalayas. The cold winds in winter from the Central Asia are being obstructed coming into from the high Himalayas. So the severity in winter is moderated. The Western Ghats, ये तो नॉर्थ हो गया. ये क्या होगा? नॉर्थ का समझा दिए. इधर अपन वेस्टर्न घाट्स पढ़े थे. ये क्या Yes, है? sir. वेस्टर्न घाट्स है. देखिए ये बहुत ऊंचे है, ये ऐसे है. लेकिन वेस्टर्न घाट्स भी है, लेकिन थोड़े कम ऊंचे है. लेकिन विंड तो पहले कहां से आ रही? Southwest. विंड इधर से आ रही, तो टच तो करना पड़ता है इधर. तो जो भी लो हाइट के जो विंड्स आ रहे, वो लोग कौन रोक ले रहे? वो लोग कौन रोक ले रहे इधर? Coastal areas. कोस्टल एरिया से पानी पड़ रहा. क्यों पड़ रहा? बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न घाट्स High wind. ट्रैपिंग दिस विंड. लो हाइट के जो विंड्स ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोगों को ट्रैप करके उधर पानी पड़ा दे. ठीक है. नाउ प्लीज रिमेंबर, इसके बाद एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पॉइंट से पढ़िए. ये पॉइंट से पढ़िए प्लीज. The western and eastern Ghats on either side of the peninsula in South India force the monsoon winds to give plenty of rainfall in the coastal regions. उसके बाद Again, the eastern slopes of the western Ghats fall in the rain shadow area as the western Ghats obstructs the monsoon winds and get heavy rainfall on the western slopes. हमने वेस्टर्न स्लोप. देखिए इधर क्या हो रहा? ये क्या है? वेस्टर्न घाट्स है. दीज आर द वेस्टर्न घाट्स. ठीक है. और ये साइड क्या है? ये क्या है? वेस्ट Coastal साइड है. areas. West side. कोस्टल एरियाज का ये वेस्ट साइड है. ये क्या है? ईस्ट East. साइड है. अब इधर क्या हो जा रहा है? जो विंड्स आ रहे हैं ना, तो विंड्स आके क्या है? इधर रोक दे रहे. इधर पूरा रोक ले रहे ना. इधर रोक ले के इधर पूरा पानी पड़ जा रहा. लेकिन व्हाट अबाउट दिस? ये साइड क्या हो जाता? ये पानी पूरा क्या इधर पड़ के खत्म हो जाता. जब इधर आते हैं तो इधर भी effect पड़ता. विंड बिकम्स ड्राई. तो इधर पानी नहीं पड़ता. ये पॉइंट पढ़िए. अगेन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट फॉल इन द रेन शैडो एरिया. माने वेस्टर्न घाट क्या है? लीवर्ड साइड है. ये क्या बन गया? रेन शैडो. माने पानी उधर ही खत्म हो गया, इधर खाली विंड्स आ गए. तो ये एरिया क्या बोल रहे हैं आप? Rain shadow. रेन शैडो. माने रेन्स बस खाली बस छींटे आते खत्म हो जाते.
इट इज द रेन शैडो रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट। अगर आपको क्वेश्चन आया वेस्टर्न घाट का कौन सा साइड रेन शैडो रीजन है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ, साउथ, क्या बोलते हैं आंसर? ईस्टर्न साइड्स। ईस्टर्न साइड, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट ऑब्स्ट्रक्ट द मानसून विंड एंड गेट हेवी रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स। वेस्टर्न समझ में आ गए? तो ऊपर हिमालय क्या कर रहे हैं? दो काम कर रहे हैं, एक तो सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आ रहे वो रोक दिए, और जो साउथ वेस्ट के जो विंड्स आ रहे उसको रोक देके पूरा पानी ले रहे उसके पास। इधर वेस्टर्न घाट क्या कर रहे हैं, इधर पेनिनसुला में वेस्टर्न घाट में पूरा पानी आ जा रहा, वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज फुल ऑफ रेन एंड द ईस्टर्न साइड इज रेन शैडो। रेन शैडो। ठीक है, रेन शैडो माने पानी नहीं पड़ता हुआ या बहुत ज्यादा कम पड़ता, और ये साइड क्या है, रेन बहुत ज्यादा पड़ता। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द वेस्टर्न घाट्स आर कवर्ड? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा, कर्नाटका, केरला, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है, अब केरला में फुल बारिश हो रही, और इधर क्या है, ये साइड क्या है, ईस्टवर्ड कौन सी सिटी है, कौन सा स्टेट है, ये साइड कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है, ये साइड ईस्टवर्ड कौन सा स्टेट आता, ये कौन सा स्टेट आता, तो जवाब दीजिए, ये साइड कौन सा स्टेट आता, ये साइड कौन सा स्टेट आ रहा, ये साइड कौन सा स्टेट है, केरला। केरला। ये साइड कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु। भाई आपका विजुअलाइजेशन है नहीं उधर इंडिया के मैप में। ये क्या है, केरला हो गया, ये क्या है, तमिलनाडु हो गया, फिर बीच में कर्नाटक, फिर उसके बाद में एपी, फिर उसके बाद में तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में भी बहुत ज्यादा, ना ही ज्यादा ना ही कम। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है? अगेन द ईस्टर्न स्लोप और वेस्टर्न स्लोप में पानी क्यों, वेस्टर्न स्लोप में पानी क्यों ज्यादा पड़ता और ईस्टर्न स्लोप में पानी क्यों कम पड़ता, समझ में आ गया? भाई यस और नो? यस सर। शीमा, अमतुल, जी सर। अर्शिया, क्लास समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ सर, समझ में आई। मेघना, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्लास? Yes, sir. Then you have Zara. Yes, sir. But I want response. I don't want one-way class. If you have understood, say understood. Otherwise, say, sir, I did not understood. Okay? Understood, sir. These are relief features. Shall I move on to the next slide? Yes. Now, please read. A diagram is given. Map is given. What is given on the map? Coastal areas have equal climate, whereas interior parts have extreme climate. So, coastal areas have equable climate. Yes. What are coastal areas? Kolkata, Chennai, Mumbai, Mumbai, Delhi, Whereas the interior parts, Delhi, Shimla. they are the interior parts. ठीक है? Interior parts have extreme. Yes. Next, coming to the pressure and winds. Please read. Someone take the lead and read. Start reading. The climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions. First one, pressure and surface winds, upper air circulation and western cyclonic disturbances and tropical cyclones. India lies in the region of. Okay. देखिए, pressure and winds. What is pressure? wind. What is pressure? Pressure is the area. pressure is the atmospheric pressure. ठीक है? Pressure is the
Atmospheric pressure. Atmospheric pressure. ठीक है. Next, in the climate, what is wind? Flowing of air. The climate Air. and associated weather conditions in India are governed by following atmospheric conditions. What are those? What are those? Pressure and surface wind, upper Pre- air circulation, and western cyclonic disturbances and tropical cyclones. And tropical cyclones. तीन चीजें बहुत ज़्यादा important है. One is pressure and surface wind. What is the surface winds? Which are closer to the earth. Which are closer to the earth surface are known as surface winds. ठीक है. Next, pressure is the pressure difference, and then upper air circulation. What is upper air circulation? What is upper air circulation? देखिए, this is, we have seen how many layers are there? How many layers are there? What is the first layer known as? Layer. Layers of कितने layers है? force. सबसे पहला layer क्या है? What is the first layer? Lithosphere, sir. Lithosphere. This is That- lithosphere. ठीक है. Everything climate माने lithosphere में ही हो रहा. Climate means it is happening in lithosphere Lithosphere. only. उसके अबाव नहीं जाता कुछ भी. वो जो भी आपको बादल दिख रहे हैं, जो भी दिख रहे हैं, मेजरली इट इज हैपनिंग इन लिथोस्फीयर. और ये सर्कुलेशन है. दीज आर सरफेस विंड्स. ये क्या है? ये जमीन के एकदम करीब है. ये जमीन के करीब है नहीं है. क्या? दिस पार्ट. हाँ जरा वो Yes, 2 बजे sir. के अटेंड करना है ना सर. 20 इधर दिस व्हाट इज हैपनिंग दिस. ये क्या है? ये क्या है? ये जमीन के करीब है. Yes, sir. इज नोन एज सरफेस विंड्स. ठीक है. इज नोन एज सरफेस विंड्स. देन यू हैव एकदम टॉप पे दिस इज द ट्रोपोपॉज. व्हाट इज दिस? ये क्या है? ट्रोपोपॉज. तो उसके नीचे ये क्या हो गया? अपर एयर सर्कुलेशन. अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. माने व्हाट आर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस? ये अपना इंडिया है. दिस इज अवर इंडिया. ठीक है. उसके बाद दिस इज द वेस्ट साइड. ईरान, अफगानिस्तान. So some of the airs are coming from western region, which is making the climate of Delhi moderate. It is known as western cyclonic disturbances. ठीक है. Next, if you see, this is the Mediterranean river here. Mediterranean Sea is there. उधर से जो पानी आ रहा है उसको बोलते हैं western cyclonic disturbances and tropical cyclone. Tropical cyclone. What is tropical cyclone? ये क्या बोल रहे हैं आप? इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में क्या एरिया बोल रहे? इट इज नोन एज ट्रॉपिक्स है वो. द एरिया बिटवीन इक्वेटर टू ट्रॉपिक इज नोन एज ट्रॉपिकल एरियाज और टॉरिड जोन. यस और नो? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. आर यू एबल टू इमेजिन मैं क्या बता रहा हूँ? अब अगर ग्राफिकली समझ में आना आपको. Yes, sir. Tropical areas, the area between equator and tropic of Cancer. ये tropic of Capricorn. India किधर है? Where is India? India is here. Tropic of Cancer. India is here. So इधर क्या है? What is here? Bay of Bengal and Arabian Sea and Indian Ocean. इधर से जो साइक्लोन्स बन रहे,
इधर जो साइक्लोन्स बन रहे, इससे क्या हो रहा, इंडिया में प्रॉब्लम हो रही, कोस्टल एरिया स्पेशली आंध्रा एंड कोस्टल ओडिशा, इसको बोलते हैं आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। प्लीज रीड फ्रॉम हियर। India Please read. lies in the region of north. India lies in the region of northeasterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow south, get deflected to the right due to the Coriolis force, and move onward the equatorial low pressure area. Generally, these winds carry very little moisture as they originate and blow over land. So, Shima, please read once again slowly. Pressure and winds. The climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions. Pressure and surface winds, upper air circulation, and western cyclonic disturbances and tropical cyclones. इसके बाद India lies in the region of northeasterly winds. एक मिनट सुनो, समझो पहले, एक सेंटेंस समझना जरूरी है। आप ये क्या डाला मैं इधर, व्हाट डिड आई ड्रॉ हियर, व्हाट डिड आई ड्रॉ, अर्थ, दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया, समझे, ये इंडिया में है, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ व्हाट, नॉर्थ ईस्टर्ली, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। व्हाट इज द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, माने ये जो एरिया है ना, ये जो इधर क्या आ रहा, ये सन की तरफ पूरे भाग के आते, पूरे विंड्स सन की तरफ पूरे विंड्स भाग के आते, और ये ऊपर जाते रहते, ठीक है, आ रहे जा रहे। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं विंड्स, ये इंडिया लाइज इन द एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। विंड्स कहां से आ रहे, पूरे कहां से आ रहे, ये पूरे, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, समझ में आ रहा है। सो इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ये पूरे एयर क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ भाग के आ रहे हैं, जहां सन रहता, उसके बाद पढ़िए, समझ में आया, कैसा आया। नेक्स्ट प्लीज। These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. तो ये क्या है, इक्वेटर के ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे हिस्से क्या बोलते हैं, Southern hemisphere. Southern hemisphere. southern hemisphere. So these winds originate from the subtropical high pressure belt, subtropical high pressure belt. Please remember, ये सन है इधर, दिस इज द सन, सन इधर इक्वेटर पे है, तो इधर क्या हो जाता, जहां सन रहता वहां क्या बोलते हैं आप, वहां लो प्रेशर आ जाता, और इधर क्या है, इधर क्या जम जाता, इधर अगर हाई प्रेशर है तो इधर क्या रहता, Low pressure. अगर इधर हाई, ये क्या है, सन इधर है समझो, सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इधर क्या रहता, साउथ में, जहां सन है वहां कौन सा प्रेशर रहता, Low pressure. लो प्रेशर रहता, ठीक है। और पूरे विंड्स इधर भाग के आ रहे, तो ये कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हो गया, क्लियर। Yes. उसके बाद में, और सब ट्रॉपिकल माने, ये देखो अपने, ये क्या है, एग्जैक्टली 23.5 के अंदर है तो ट्रॉपिकल है, 23.5 के ऊपर हो गया तो ये इंडिया आधा इधर आधा ऊपर आधा नीचे है, तो इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये एरिया क्या बोल रहे हैं आप, सब ट्रॉपिकल माने आधा, आधा अंदर आधा ऊपर आधा नीचे,
उसके बाद They blow south. ये समझ में आया? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सन इधर है तो इधर क्या है? लो प्रेशर है, तो इधर क्या रहेगा? High pressure. हाई प्रेशर में रहता। क्लियर? नेक्स्ट, They blow south, get deflected to the right due to the Coriolis force, and move on towards the equatorial low pressure area. माने इधर देखो, आप देखो, कोरियोलिस वाज द ज्योग्राफर हु डिस्कवर्ड दिस विंड्स, ठीक है, वाज द ज्योग्राफर। ना इधर आ रहे, देखिए विंड कभी भी कैसा आते हैं? विंड स्ट्रेट आते हैं या गोल गोल आते हैं? विंड कभी डजंट कम लाइक दिस, विंड डजंट कम लाइक दिस। विंड कैसा आते? इट कम्स लाइक दिस। बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर नॉर्थ हेमिस्फीयर में अलग रहता, ये क्या हो जा रहा? ये पलट गया तो किधर पलट जाते लोग? फिर ऐसा चले आते। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है? बिकॉज आपको क्वेश्चन आता ही आता, कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्थ ईस्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा डायरेक्शन ले रहे विंड्स? Equatorial low pressure. नहीं, डायरेक्शन पूछ रहा हूं मैं, कौन सा डायरेक्शन घूम रहे? कौन सा डायरेक्शन है ऐसा घूम रहे? तो वी डायरेक्शन इट इज? क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. ये क्लॉकवाइज ऐसा रहता ना, देखिए, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट। इधर ऐसा आ रहे हो लोग, सॉरी एक मिनट, कैसा आ रहे लोग? ऐसा आ रहे ना, दे आर कमिंग लाइक दिस, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट। तो कौन सा डायरेक्शन हो गया ये? Clockwise. ऐसा ये एंटी क्लॉकवाइज है। Clockwise. डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट माने एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट माने क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है। एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, फिर वैसे चले आ रहे। उसके बाद पढ़िए, Generally, these winds carry very little moisture as they originate and blow over land. as they originate and blow over land, समझ गए? So India lies in the region of north easterly winds, ये पॉइंट समझे? Yes, sir. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere, माने इंडिया ट्रॉपिक के बीचों बीच है। अगर अंदर रहता तो ट्रॉपिक बोलते थे, ऊपर आ गया इसका मतलब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये समझ गए पॉइंट? द विंड्स ब्लो टू द साउथ, द विंड्स ब्लो टू द साउथ, विंड्स आ रहे ऐसा, ठीक है। उसके बाद दे ब्लो टुवर्ड्स साउथ माने नीचे आते जा रहे, और कोरियोलिस की वजह से किधर कौन सा डिफ्लेक्शन हो रहा है लोगों का? राइट, ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। माने देखिए, अर्थ कैसा फिर रहा? दिस कोरियोलिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कोरियोलिस फोर्स कैसा फिर रहा? अर्थ कैसा फिर रहा? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट, माने ये आपको क्वेश्चन आया, इफ यू गेट ए क्वेश्चन, what is the reason behind the Coriolis force? It is the rotation of the earth. Please remember, what is the rotation of the earth? West side to east. West to eastern side. Because of this, the earth is turning, and because the earth is turning, with that earth the atmosphere is also turning. Because of that, the wind is also turning, and because of the wind is turning, the atmosphere is changing its orientation. Okay, if you get a question, what is the reason behind the Coriolis force? It is the west to east. समझे? It is the rotation of the earth from west to east. समझ में आ गया? Coriolis force का reason is rotation of earth. ठीक है? Clear? Next. Yes, sir. इसके बाद पढ़िए, they move towards the equatorial low pressure belt.
इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट माने ये इधर वापस लोग इक्वेटर की तरफ आ रहे। नेक्स्ट प्लीज, सब पढ़िए। Generally, these carry very little moisture as they originate and blow over land. तो ये विंड्स कहां से स्टार्ट हो रहे? जमीन पे स्टार्ट हो रहे या सी पे स्टार्ट हो रहे, ओशन पे स्टार्ट हो रहे? Coastal. ठीक है, जनरली these winds carry very little moisture as they originate माने स्टार्ट होना and blow over land। देखिए अगर आप if you have observed, this is our earth, this is our earth, ठीक है। पूरी जमीन क्या है? जमीन किधर है? इधर एक छोटी जमीन है, ये एशिया है, फिर इसके बाद में यूरोप है, ये थोड़ा अफ्रीका हो जाता, इधर ये अफ्रीका हो जाता, ठीक है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो मेजरली किधर है? मेजरली किधर है? ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? दिस इज यूरोप, दिस एशिया। तो मोस्ट ऑफ द जमीन किसके ऊपर है? किधर है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में है? Northern Hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड जो आ रहे, कहां से आ रहे? नॉर्थ ईस्ट, Northeast. नॉर्थ ईस्ट से आ रहे। तो ये जो हवाएं हैं कहां कहां कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर। वाई? क्योंकि जमीन से वो ओरिजिनेट हो रहे और जमीन पे बह रहे। they are originating on the land and they are blowing over the land। समझ में आ रहा? क्लियर? Yes, समझ में आ sir. गया पॉइंट पूरा? ये एक पे पूरा क्वेश्चन बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज रीड द जेट स्ट्रीम्स। प्लीज रीड द जेट स्ट्रीम्स। Jet stream. These are a narrow belt of high altitude, about 12,000 meters, westerly winds in the troposphere. Their speed varies from about 110 kilometer upper height in summer to about 184 kilometer height in winter. A number of separate jet streams have been identified. The most constant are the mid-latitude and the subtropical. पढ़िए क्या है? these are narrow belt, these are the narrow belt of high altitude। कितना altitude? 12,000 meters. 12,000 meters। westerly winds माने westerly माने they are coming from west, they are coming from west to India। winds in the troposphere, ये जो भी एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं अपन, कौन से स्फीयर में हो रहा? ओनली एंड ओनली Troposphere. ट्रोपोस्फियर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, उसकी स्पीड कितनी रहती? 110 kilometers per hour. 110 to 184. 184। 110 कब आ रहा? Summer में. समर में आ रहा। 184 कब हो रहा? Winter में. विंटर में हो रहा, ठीक है, माने सर्दियों में, ठीक है। और उसके बाद द मोस्ट कॉन्टेंट आर मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। मिड लैटिट्यूड माने जो लैटिट्यूड से एकदम बीच में जा रहा। व्हाट इज मिड लैटिट्यूड्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिड लैटिट्यूड्स?
ये क्या है? What is this? What is this? Earth. अर्थ है. ये कौन सा लैटिट्यूड है? दिस इज अर्थ. दिस इज द इक्वेटर. These are the mid latitudes. ठीक है? These are the mid latitudes in the northern hemisphere, and these are the mid latitudes in the Southern hemisphere. southern Yeah. hemisphere. So most constant are area is found in mid latitudes and subtropical like this. Mid latitudes and subtropical like this. समझ गए? Understood what is mid latitudes? These are, ये क्या है? Lower latitudes. Equator के जो करीब रहते, the latitudes which are closer to the equator are known as lower latitudes. उसके बाद में you have mid latitudes and you have higher latitudes. Are you able to understand this? First क्या रहते? Equator के करीब. Equator के करीब is lower latitudes. उसके ऊपर Mid latitude. mid latitudes. फिर उसके ऊपर High latitude. higher latitudes. It is in northern. फिर उसके बाद में in the southern same. फिर lower latitudes. Then you have mid. Mid latitude. Then you have higher. High. High. ठीक है. The diagram is not very much clear. If we can draw the diagram once again. This is the equator. ठीक है. This is the Tropic of Cancer. This is the latitude. This is Tropic of Cancer. This is Tropic of Capricorn. फिर उसके बाद में क्या आया? What is this line is called as? Mid latitude. ये एरिया क्या बोल रहे हैं आप? This area is known as Mid latitude. mid. इसके ऊपर Higher High. latitude. ये lower. Lower. फिर ये lower हो जाता. फिर ये mid हो जाता. फिर Higher ये latitude. High. High. high हो जाता. High. High. ठीक है, समझ में आ गया? Clear? Yes. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. If you are able to see the diagram here, these are the mid latitudes. These are mid latitudes. These are mid. These are lower. ठीक है? These are higher latitudes. High. These are higher latitude. Understood this point? Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay. So relief हो गया. We have seen this. Jet streams. Clear? Is this class clear today? Yes, sir. Yes, sir. तो समझ में आ गया इसी क्लास. क्या क्या पढ़े आज की क्लास में? We have revised what we have started the climate. Then we have seen the climate. Then we have seen weather. Then we have seen the monsoon. Then we have seen the revised this equinox and solstices. Then latitude, altitude, lapse, क्या बोलते हैं, normal lapse rate. Then the variation of temperature. Then you have distance from the sea, continentality. Then we have seen the impact of prevailing winds. Then we have seen the relief. Then we have seen the coastal part and interior parts. Then we have pressure and winds. ठीक है, we have pressure and winds. We have pressure and winds. Then you have the उसका effect देखे इंडिया पे. इंडिया पे कौन से which winds are coming in India? Which winds are coming in North. India? Northeasterly. Northeasterly winds. कौन से एरिया में? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के एरिया में. ठीक है, they blow south and they are deflected to right. They are deflected to right due to which force? Coriolis force. Coriolis force. Coriolis force is because of Rotating of the earth from west to east, sir. west to
East. East. ठीक है, as this is Earth is turning, the atmosphere is also turning. It deflected towards, ऐसा आ रहे लोग, it deflected towards right. Right. ठीक है, due to the Coriolis force and move towards the equatorial low. ऐसा आ रहे लोग. Now please remember, it is happening like this. They are coming from north and आते आते क्या हो गया? They are deflected towards right. This is the equator. This is the equator. You can understand this clearly once again. This is the earth. ठीक है? This is the equator. The winds are coming like this in the from northeast region, and because of the earth is turning like this west to east, it is deflecting towards right. Yes or no? और ये डिफ्लेक्ट होने की वजह से कौन सा बन रहा है ये? Which direction it is making? Clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. अगर सेम ये क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है. सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता? विंड्स ऐसा आते, इधर से आ रहे विंड्स, they are coming, the winds are coming like this. In southern hemisphere the winds are coming like this. इधर क्या बन जाता? क्लॉकवाइज. Clockwise. कोरियोलिस फोर्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दोनों भी राइट की तरफ मुड़ते, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विच दे टर्न क्या आ रहा? एंटी क्लॉकवाइज बन रहा, इधर क्लॉकवाइज बनता. प्लीज रिमेंबर. ठीक है, उसके बाद में इक्वेटोरियल लो की तरफ आ रहे. जनरली दिस विंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर द लैंड. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादातर जमीन है, सदर्न हेमिस्फीयर में there is not much land. ठीक, इसका ना जेट स्ट्रीम्स पढ़े. व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स? नैरो बेल्ट, हाई एल्टीट्यूड, वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर. क्या क्या याद रखते? जेट स्ट्रीम्स का क्वेश्चन आता ही आता. जेट स्ट्रीम्स आर नैरो बेल्ट, हाई एल्टीट्यूड, westerly winds in the troposphere. Their speed varies from 110 to 184. 110 in Summer. summer, 184 in Wind. Winter. winter. ठीक है, they separate, the number of separate jet streams has been identified. The most constant are in mid latitude. What are mid latitudes? The area between tropic of Cancer. 23 and up to 60 degrees. ठीक है, 23 and up to 60 degrees. ठीक है, समझ में आ गया? So I hope today's class was clear, both the modern history class as well as geography class. ठीक, okay. So inshallah, I think I have to go